So we started our discussion on object-oriented programming in Python. So we'll continue with that. And so far, what we have seen, class हम कैसे define करें. Then just a minute. Please mute. Sheikh Bilal. Okay. So we started with how to define a class, then how to define the methods in a class, how to define the class variable, how to define the instance variables. Then हमने ये भी देखा कि how to define a constructor in a Python class, and then how to define even a static method. So all those things we have already seen, and हमने ये भी देखा कि the constructor in a class always have a name dunder in it. तो कोई भी class हो आपकी Python की, there is only one constructor per class. I repeat, there is only one constructor per class with a name dunder in it. And you can use a single constructor in multiple situations by defining your constructor in such a way. What I mean to say, कि without argument आप अगर अपना object create करते हो तो भी same constructor call होगा. With arguments अगर आप अपना object create करते हो तो भी same constructor call होगा. And even you can make your constructor a copy constructor also. तो वो सब possibilities हमने देखी है, and I am sure you must have understood that. Now let's move to the next part, and the next part is about inheritance in Python. So session on class. Okay, let me create a new one. Session on inheritance .py. Okay, so you must be knowing what do you mean by inheritance. May I know? थोड़ा सा इसके अब हम रिव्यू करेंगे, then we will implement. तो क्या होता है inheritance, क्या होता है inheritance का use क्या होता है? Yes, please. You can unmute your mic and say the answer, or you can put your answer into the chat box. But I recommend you to unmute your mic and answer it. What is inheritance and what is the use of inheritance? In general, irrespective Transfer of class from parent to child. So changes. What changes? सर पेरेंट क्लास और ये चाइल्ड क्लास के बीच में बहुत से मेथड वगैरह के अंदर जो चेंजेस वगैरह होते हैं. ओके सर एग्जिस्टिंग क्लास को न्यू क्लास से अपडेट क्लास एक वन स्टूडेंट एट अ टाइम, अदरवाइज सर एग्जिस्टिंग क्लास को न्यू क्लास से मॉडिफाई करने का. एग्जिस्टिंग क्लास को न्यू क्लास से मॉडिफाई करना है. ओके ठीक है. What else? Or the matter and properties from different other classes. Okay, good. What else? और कुछ? Child class can inherit properties of parent class. ठीक है. Child class can inherit the properties and also the behavior of the parent class. That is also fine. And what is the use of inheritance? Why do we do inheritance? Why do we inherit the properties and the behavior of one class into another class? Why do we do that? सर चाइल्ड क्लास में कुछ मेथड अगर हमें पेरेंट क्लास के यूज करना रहता है तो हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं. सर रीयूजेबिलिटी के लिए. Sorry? क्या करने के लिए? रीयूजेबिलिटी के लिए. रीयूजेबिलिटी के लिए. Very good, beta. Good answer. So we make use of inheritance for reusability. ठीक है. सबसे important जो application inheritance का
जो रीजन है इनहेरिटेंस का वो है रीयूजेबिलिटी। नाउ इफ यू हैव समथिंग विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ठीक है, और आप अब एक नई चीज ऐसी इंप्लीमेंट करते हो, एक नया काम ऐसा करते हो जिसके अंदर जो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो भी यूज होगा और प्लस आपको उसके आगे भी कुछ करना है, तो व्हाई टू वर्क फ्रॉम स्क्रैच? Why to work from scratch? Instead of working from scratch, what can be done कि भाई जो already available है उसको आप ले लो कहीं से and then you build on top of that, ठीक है। तो जो ऑलरेडी अवेलेबल है वो आपको मिल गया, अब आप इसके ऊपर जो भी आपको और काम करना है आप वो काम करो, इसको एनहांस करो। तो व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम ऑलरेडी अवेलेबल थिंग बिकम्स योर बेस क्लास, ठीक है। जहां से आप चीजें ले रहे हो दैट बिकम्स योर बेस क्लास, एंड देन बेस क्लास आपने ले लिया, आपने बेस क्लास से डिराइव किया, आपने बेस क्लास को इनहेरिट किया। अब आपकी जो चाइल्ड क्लास है, जो आपकी डिराइव्ड क्लास है, उसके अंदर आप और भी जो चीज आपको ऐड करना है दैट यू विल ऐड, फाइन। So your child class is something like a latest class, okay? Or your child class, your derived class is a class which has the properties and behavior of the base class, and it has some add-on things, ठीक है। So in this case, what you are doing कि जो आपके already available है, you are reusing it. वो बेस क्लास कहीं ना कहीं ऑलरेडी यूज हो रही थी, अब आपने क्या किया, उस बेस क्लास को यहाँ पर भी यूज किया। तो वी से दैट इट इज रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, इट इज रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इनहेरिटेंस दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि भाई हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड है हम उसको रीयूज कर दे और उसके ऊपर और भी कुछ चीजें ऐड कर दे, एंड दैट बिकम्स आवर डिराइव्ड क्लास और द न्यू क्लास और द चाइल्ड क्लास, whatever you want to call it. ये लाइन कहाँ से आ गई? फ्रॉम मैथ इन्फो TXP1। inheritance and then अच्छा, now different object oriented programming languages have different style, different way of implementing the inheritance, fine। और फिर inheritance के अंदर भी अपने अपने टाइप होते हैं, सिंगल inheritance है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। जो इनहेरिटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से इनहेरिटेंस के टाइप डिफर होते हैं, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू जस्ट रिमेंबर दैट inheritance is about reusability of your code, reusability of something which is already existing, ठीक है। So now what I will be doing, क्या हमें पता है कि भाई क्लास हम कैसे डिफाइन करते हैं पाइथन के अंदर, we make use of class keyword and then the name of a class, for example something like this जो कि हमने लास्ट प्रोग्राम में किया था, then colon and then your class definition, फिर हमारे क्लास का डेफिनेशन हो गया। Now if I want this employee class to be inherited from some other class, अगर मुझे चाहिए कि जो employee class है वो किसी और क्लास से इनहेरिट हो, for example let me say that I got one more class in my program and that is my student class. I will be having something in my student class, fine। अब मैं अगर ये कहता हूँ कि employee and student they both have something in common, ये दोनों में कुछ कॉमन चीजें है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय हैज अ नेम, स्टूडेंट आल्सो हैज अ नेम, एम्प्लॉय हैज अ एड्रेस, स्टूडेंट आल्सो हैज एन एड्रेस, एम्प्लॉय हैज अ जेंडर, स्टूडेंट आल्सो हैज अ जेंडर, एंड सो ऑन। तो कुछ चीजें ऐसी है जो कि दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन चीजें है ना, व्हाई नॉट टू हैव वन क्लास व्हिच इज हैविंग दिस कॉमन थिंग्स एंड देन दैट बिकम्स अ बेस क्लास, और उस बेस क्लास को आप रीयूज करो दोनों जगह, एम्प्लॉय में भी यूज करो आप, स्टूडेंट में भी यूज करो। तो एम्प्लॉय और स्टूडेंट में जो आप सेम काम करने वाले थे वो काम को आपने अलग कर लिया, उसके लिए आपने एक अलग क्लास बना ली और उस क्लास को आप यूज कर रहे हो, एम्प्लॉय में भी यूज कर रहे हो, स्टूडेंट में भी यूज कर रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई मीन टू से दैट बोथ दिस employee and student both are person, both are what, both are person, and employee is also a person and student is also a person, and person is a common thing which has the common stuff. A person has a name, a person has an address, a person has a gender, and so on. A person has a security number, and so on. A person has an Aadhaar number, PAN number, which is applicable
to any kind of person. A person may be employee, a person may be student, a person may be businessman, and so on. ठीक है? A person may be entrepreneur. तो ये सब चीजों में a person is common. So what can be done? We can have one class as person, and then we will have something in this person class. ठीक है? अभी जो person class है, इस person class को हमें employee में inherit करना है, हमें student में भी. Why? Because employee is a person and student is also a person. So in Python, if you want to inherit any class, if you want to inherit any class, or if you want to derive from any class, the syntax is straightforward and simple. Class keyword, the name of your derived class, and then after that, have a parenthesis, and then write the name of your base class. So my base class is person, I would write person. Done. ठीक है? अगर मेरे पास मल्टीपल बेस क्लासेस है तो आई वुड बी राइटिंग कॉमा एंड देन नेम ऑफ द मल्टीपल बेस क्लासेस, person 1 कॉमा person 2 फॉर एग्जांपल, समथिंग लाइक दैट. ठीक है? तो जितनी भी आपकी बेस क्लासेस थे आपको डिराइव करना है मल्टीपल बेस क्लासेस से, यू कैन हैव दिस वे. अगर एक सिंगल बेस क्लास है तो सिंगल बेस क्लास का नाम लिखो और पैरेंथेसिस को क्लोज करो. स्टूडेंट आल्सो being derived from person class, I would write in parenthesis. ठीक है? Getting it? How to inherit in Python? It's very simple and straightforward. और जब मैंने आपको यहाँ पर कॉमा वाला हिसाब बताया तो इसका मतलब ये हुआ कि more than one class से आप inherit कर सकते हो. So what kind of inheritance it is? If I'm deriving a single class from multiple base classes, what type Multiple of inheritance. Multiple. Yes, it is multiple inheritance. So in short, Python supports multiple inheritance without the problem, without a diamond problem, without a diamond problem. Diamond problem क्या होता है? इसको जनरली एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम भी बोलते हैं C++ के टर्म्स में. सर अगर एक चाइल्ड क्लास है और उसके दो पेरेंट क्लास है तो सर वो कंफ्यूजन रहता है कि कौन से पेरेंट क्लास की मेथड्स एंड बिहेवियर वो इनहेरिट करेगा. Multiple copy आ जाए. For example, you got say A as your base class, and then you got B, which is inherited from A, then you got C, which is also inherited from A, and then you got D, which is inherited from B and C. ठीक है? तो this is something like a diamond problem. इसको थोड़ा एक टर्म में डायमंड प्रॉब्लम भी बोला जाता है फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव. तो आप किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग साइट पे जाते हो और अगर आप इस तरीके से प्रॉब्लम से डील करते हो तो सच अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज डायमंड प्रॉब्लम. तो ये डायमंड प्रॉब्लम होता है व्हिच ऑकर्स व्हेन यू हैव मल्टीपल इनहेरिटेंस. ओके? तो जैसे कि ए है, B is derived from A, C is derived from A, and then D is derived from B and C. तो ये जो D है यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस आ गया. और ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर में क्या होता है कि A की प्रॉपर्टी की कॉपी B से D में आ रही है और A की ही प्रॉपर्टी की कॉपी C से D में भी आ रही है. ठीक है? तो एक सेम चीज की दो कॉपी D में आ रही है. सो देयर इज एन एम्बिग्यूटी. वहां पर फिर कंपाइलर को थोड़ी एम्बिग्यूटी आ जाती है कि विच कॉपी हैज टू बी यूज्ड. So this problem do exist in C++. This problem is resolved in Java with the help of Super. Super keyword. With the help of interface. इंटरफेस. With the help of interface. तो Java के अंदर ये problem resolve होती है with the help of interface, and in Python you don't have to worry for that. So this is called diamond problem in short. So you should remember. इसको यहीं पे रखता हूँ. And we come back to the definition of a person class. Person class को हम define कर लेते हैं. Every person has got a name. Then every person has got an address. Then every person has got an age. Then every person has got a contact number, mobile number, whatever you call it. और क्या चीज होंगी? Address हो गया, age हो गया, contact हो गया, and then some identification number you can say.
I mean to say even PAN number, Aadhaar card, anything like that. Fine. Then फिर इसके बाद में इसके related functions आप लिख सकते हो. You can have a constructor into this. So I would say before constructor, let me have something called a set prop to set the properties. पहला जो होगा वो self होगा. फिर उसके बाद में you are going to have name, then address, then age, and then contact. Then I would say self dot name equals to n, self dot address equals to a, then self dot age equals to age, and then self dot contact equals to c. Done. Then likewise I can go for another method, say get prop, और यहाँ पर प्रॉपर्टीज को गेट करेंगे. So here I would be returning return self dot name comma self dot address self dot address comma self dot age comma self dot contact. So this completes the definition of a person class. For example, I am avoiding the declaration of the constructor right now. वो मैं आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर कैसे होता है. बट फर्स्ट लेट्स हैव इनहेरिटेंस इन प्लेस. पहले इनहेरिटेंस को कंप्लीट कर लेते. नाउ अब देखिए यहाँ पर कि एम्प्लॉय क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम पर्सन. इट मीन्स दैट कि भाई पर्सन की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, उसका जो भी बिहेवियर है, बिहेवियर मतलब उसके जो भी मेथड्स है, ऑल दोज थिंग्स आर इनटू एम्प्लॉय आल्सो, आर डिराइव्ड इनटू एम्प्लॉय. So you got this name, address, age, contact. You got set prop and you got get prop. Fine. अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसके अलावा जो हमको चाहिए कि भाई हर एम्प्लॉय का नेम होगा, एड्रेस होगा, एज होगी, कॉन्टैक्ट होगी और कॉन्टैक्ट नंबर होगा. उसके बाद में और भी कुछ चीजें होंगी. अब और क्या चीजें होंगी? You are going to have an employee number for an employee. So I will be defining that. I will be defining that, and then it may have a department also, employee, and then employee is going to have your location also. Okay, so we'll put these things. Now address and location, these two are two different stuff. The location is about that at which location of a company the employee works. Okay, so that is about the location. And then आपको कुछ प्रॉपर्टीज ऊपर से मिली, कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ से मिली. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका सेट एम्प्लॉय बोल के एक मेथड ले लेते हैं. सेट प्रॉपर्टी जो है मेथड वो ऊपर से हमें मिल रहा है. नाउ सेल्फ कॉमा देन आई कैन हैव नेम ऑफ एन एम्प्लॉय, एज ऑफ एन एम्प्लॉय, देन और I can first check for employee number, then name of an employee, then age of an employee, sorry, address of an employee, then age of an employee, then contact detail of the employee, then department of the employee, and then location of the employee. अब यहाँ पर जो चीजें हमारी सेट प्रॉप से सेट होंगी वो चीजें हम सेट प्रॉप सेट कर देंगे, और जो चीजें हमको यहाँ पर सेट करता है हम यहाँ पर सेट करेंगे. What I mean to say कि सेल्फ डॉट ईएमपी नंबर ये हमको यहाँ पर सेट करना है. वो किससे आया? ई से आ गया. देन सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट ये किस में आया? डी में आ रहा है, हम इसको डी में ले रहे. एंड देन सेल्फ लोकेशन ये हम एल में ले रहे. देन आई विल बी कॉलिंग सेल्फ डॉट सेट प्रॉप. सी केयरफुली, सेट प्रॉप. सेट प्रॉप जो मेथड है वो बेस क्लास से हमको मिल रहा है. ठीक है, तो हम सेट प्रॉप मेथड को कॉल कर रहे. और यहाँ पर हमें क्या क्या पास करना है? हमें ये तो रेफरेंस है ऑब्जेक्ट का, तो ये हमें एक्सटर्नली नहीं पास करना है. इसके अलावा 4 पैरामीटर है. तो फर्स्ट इज नेम. नेम के लिए हमने यहाँ पर एन लिया. फिर एड्रेस के लिए हमने ए लिया. एज के लिए हमने एज लिया है. और कॉन्टेक्ट के लिए हमने यहाँ पर सी लिया है.
Fine, done. So now this way एम्प्लॉय के जितने भी एट्रीब्यूट्स है जो हमें पर्सन से मिल रहे हैं और जो एम्प्लॉय के खुद के एट्रीब्यूट्स है वो सब हम यहाँ पर सेट करते हैं. फाइन. Likewise, you can have get emp, get employee. और यहाँ पर हमें कुछ और नहीं भेजना है, only this much. और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें रिटर्न क्या क्या करना है, एम्प्लॉय की ये इंफॉर्मेशन और प्लस एम्प्लॉय की जो ऊपर से हमें इंफॉर्मेशन मिली वो भी. तो यू कैन कॉल गेट प्रॉप और यू कैन डायरेक्टली रिटर्न फ्रॉम हियर. सो बिकॉज सेल्फ के अंदर वो सब चीजें हैं, तो आई कैन रिटर्न सेल्फ डॉट से एम्प्लॉय नंबर, देन आई कैन रिटर्न सेल्फ डॉट नेम कॉमा सेल्फ डॉट एज, देन सब चीजें नहीं रिटर्न करता हूँ मैं, सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट and then self dot location, for example. Okay, let me return only these many things. As you can see here, हमने रिटर्न क्या क्या किया, एम्प्लॉय नंबर जो कि डायरेक्टली इसमें डिफाइन है एम्प्लॉय क्लास में, नेम जो कि हमें ऊपर की क्लास से मिल रहा है पर्सन क्लास से, एज ये हमें पर्सन क्लास से मिल रही है, डिपार्टमेंट ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, लोकेशन वो भी यहाँ पर डिफाइन. Now let me have a main method. Student class को हम define करते हैं अभी, but before that let me define the main method to have the driver code. The main method is going to have our driver code. इसके अंदर हमें क्या करना है, एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करके we'll simply try to set the properties of that object and get the properties of that object. So I would say E equals to employee. कुछ पास नहीं है हम क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही हमें मिल रहा है अभी. And then I would say E dot set emp. और इसको हमें क्या क्या पास करना है, इसको हमें एम्प्लॉय नंबर पास करना है, से 1, फिर नेम पास करना है, अहमद खान प्लीज कीप योर माइक ऑफ, देन नेम के बाद में एज पास करना है, से इट इज एम्प्लॉय, सो लेट मी से 28, नहीं सॉरी इट्स एन एड्रेस, सो आई वुड से फ्रॉम मुंबई, then the age is supposed 28, then contact, so 98989, and then comma department is suppose security, cyber security लिखता हूँ, अच्छा cyber security, and then the location is suppose Pune. ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट किया, एंड नाउ लेट मी गेट द एम्प्लॉय डिटेल्स, सो ई डॉट गेट emp, and since this is returning a data I need to print it, so I would simply say print. Then I need to put a condition, dunder name, ये हमेशा याद रखो, इक्वल्स टू डंडर नेम, क्या बात है, if dunder name equals to equal dunder main, then call the method main. Okay, done. Let's compile our code and let's see whether it's working as per the expectations or not. This is session on inheritance. So Python session on inheritance.py. Okay, so it is working as expected. You have the employee number 1, then the name Ahmed Khan, then the age, then the department, and then the location. What is important that this name is getting inherited from the person class, and this age is also getting inherited from the person class, and the remaining 3 attributes are from the derived class itself. Okay, so this is a very simple way in Python by which you can inherit from one class, and then in the derived class you can extend the functionality.
जो भी आपको डिराइव क्लास में और काम करना है वो काम आप अपना कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने सेट टॉप मेथड भी यूज किया जो कि हमको बेस क्लास से मिला था। यहाँ पर भी हम गेट टॉप यूज कर सकते थे गेट एम में, लेकिन हमने वो नहीं किया। वी प्रीफर डायरेक्टली टू रिटर्न द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स और द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स। और यहाँ पर सेट टॉप में भी हम कर सकते हैं। वी कैन डायरेक्टली राइट सेल्फ डॉट नेम equals to n, self dot address equals to a, self dot age equals to age। लेकिन वो जब ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो why to do that? So we have called that method। ये चीज इतनी सबको समझ में आई? Please let me know so that I can proceed further। Yes, Yes, sir. please। Yes, sir. डाउट है किसी को? इट इज वेरी सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर आप देखें तो इम्प्लीमेंटेशन भी काफी आसान है। देखो, इनहेरिट करना भी आसान, यूज करना भी आसान। तो नाउ लेट्स मूव टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्टूडेंट क्लास। चलो आप लोग मुझे बताओ यहाँ पर मैंने क्या क्या डालना है, क्या क्या डालूं यहाँ पर। स्टूडेंट के लिए क्या रहेगा पहला एट्रीब्यूट? यस प्लीज, कम ऑन फास्ट। स्टूडेंट का Roll पहला number. एट्रीब्यूट। वेरी गुड। To have a roll number as समथिंग लाइक अ प्राइमरी की। अगर डेटाबेस के ऊपर काम करते हो तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एट्रीब्यूट हो सकता है। लाइक एम्प्लॉय नंबर कैन बी अ प्राइमरी की, but it is unique। Two student cannot have a same roll number, two employee cannot have a same employee number। Then रोल नंबर एक आ गया, उसके बाद में और कौन सा एट्रीब्यूट? Academic year. academic year। Means second year, third year. So you mean to say class or batch? Better we can call it batch। कौन से बैच में है? देन एड्रेस आपको ऊपर से मिल रहा है, आपको नेम एज ऊपर से मिल रहा है, आपको कॉन्टेक्ट ऊपर से मिल रहा है। इसके अलावा आपका रिजल्ट होता है ना, तो एक समथिंग लाइक अ पॉइंटर, पीटीआर। इसके अलावा क्या ले? एक्चुअली Address. यहाँ पर देखो तो क्लास इज द कीवर्ड ना, इसके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो मैं थोड़ा आप लोग अंडरस्टैंड कर लेना, मैं क्लासरूम लिख देता हूँ, ठीक है? तो क्लासरूम आई मीन टू से SETB, SECO और TCO और BECO, समथिंग लाइक दैट, या फिर FECO। ये सब चीजें इसमें आ सकती है। दैट इज योर क्लासरूम। अगर सिर्फ क्लास डालूंगा तो क्लास इज द कीवर्ड। सर अगर ये चीज इनपुट लेना हो किसी यूजर से तो ले सकते ना। एक मेथड ऐसा डाल लो, ये ड्राइवर कोड में मैंने यहाँ पर डायरेक्टली डाला है ना बेटा। आप इनपुट ले लो यूजर से और डायरेक्टली वो वेरिएबल यहाँ पर पास कर दो सेट EMP पे। e.setEMP, यहाँ पर हमने डायरेक्टली वैल्यूज डाल दी है ना। तो ये जो वैल्यूज है ये यूजर से पूछ लो, यूजर से इनपुट ले लो अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर, और यहाँ पर वो वेरिएबल्स पास करो। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर डायरेक्टली ये लिखा है, वैल्यूज लिखी है, उसी तरीके से वो एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख देंगे e.setEMP। और फॉर एग्जाम्पल आपने एम्प्लॉय नंबर अगर यूजर से लिया है EN वेरिएबल में तो EN लिख दो। आपने फिर नेम अगर N वेरिएबल में लिया है तो N लिख दो, ठीक है? सो दिस वे यू कैन स्पेसिफाई द वेरिएबल नेम्स। बस इसके पहले आपको उसकी कोडिंग करनी पड़ेगी, इनपुट लेना पड़ेगा यूजर से, इनपुट फंक्शन यूज करके इनपुट लो क्या प्लीज एंटर द एम्प्लॉय नंबर, उसको स्कैन कर लिए, फिर प्लीज एंटर द एम्प्लॉय नेम। So likewise you can take the data from the user and then you can pass that data to the setEMP method।
ओके, यहाँ पर मैंने कांस्टेंट डेटा लिख दिया डायरेक्टली. आई डोंट वांट टू गेट इनटू द कोडिंग ऑफ दैट इज क्वाइट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. आई assume कि you people can do that. हेलो सर, हाँ बोलो. रिटर्न में सेल्फ डॉट ईएमपी नंबर सब लिखना जरूरी है, डायरेक्ट सेल्फ डॉट गेट टॉप नहीं कर सकते? रिटर्न में सेल्फ डॉट क्या लिखेंगे? जब सेल्फ डॉट नेम के ऊपर गेट टॉप में ऑलरेडी अपन ने लिखे हैं तो डायरेक्ट अपन लेकिन सेल्फ वहां डॉट पर गेट टॉप गेट टॉप में क्या हो जाएगा, आपका नेम आएगा, एड्रेस आएगा, एज आएगा और कॉन्टेक्ट आएगा. ठीक है. अब इसके अलावा भाई आपको और भी चीजें रिटर्न करना है, एम्प्लॉय नंबर भी रिटर्न करना है. गेट टॉप जो है, गेट टॉप में आपको 4 ही चीजें मिलेंगी, नेम, एड्रेस, एज और कॉन्टेक्ट. फिर आपको एम्प्लॉय नंबर भी रिटर्न करना है, आपको उसका डिपार्टमेंट भी रिटर्न करना है, लोकेशन भी रिटर्न करना है. ठीक है. तो इसके लिए यहाँ पे ऐसे एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ. अगर आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो, रिटर्न गेट टॉप सेल्फ डॉट गेट टॉप लिख दो, कॉमा और भी जो चीज रिटर्न करना है, सेल्फ डॉट ईएमपी नंबर एंड दैट वे आल्सो यू कैन. ओके सर. और let me do that. चलो कर ही दो आपके लिए. I can do. ये जो है ना, इसको बना देते हैं कमेंट. And here I would say return self dot get prop. इसको कॉल कर लेता हूँ. और फिर इसको कॉल करने के अलावा मुझे और भी चीज रिटर्न करना है. मैं पहले लिखता हूँ एम्प्लॉय नंबर, सबसे पहले मुझे रिटर्न करना है. तो सेल्फ डॉट ईएमपी नंबर, कॉमा सेल्फ डॉट गेट टॉप एंड देन कॉमा सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट. इतनी चीजें करते हैं. ठीक. तो गेट टॉप से हमको 4 एट्रीब्यूट मिल जाएंगे, एम्प्लॉय नंबर यहाँ पर. लेट्स सी whether this way also Python works. तो ये भी करके मिल जाता है तो that's a great thing. ओहो, that is also working. अच्छा, इंटरेस्टिंगली अभी आप इसमें देखो कैसे मिल रहा है. चलो कोई मुझे जल्दी से डिफरेंस बताओ, ये लाइन में और ये लाइन में, और थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस बताओ, डेटा का डिफरेंस मत बताओ. कम ऑन फास्ट. तो फिर वो टेक्निकल गेट प्रॉप का लोगों के डिफरेंस है. फंक्शन था डेटा ना, का तो वो डिफरेंस अपने नहीं बताना कि ऊपर लोकेशन आ रहा है नीचे लोकेशन नहीं आ रहा है. क्या बोलो सर जो गेट प्रॉप, सर वहां पर गेट प्रॉप एक्स्ट्रा लिया ना सर, तो फिर जो गेट प्रॉप का सेमीकोलन था उसके अंदर अहमद खान मुंबई 28 और फोन नंबर आया, और जो बड़ा वाला कॉलम था उसके अंदर सर एम्प्लॉय का नंबर और उसके बाद लोकेशन, अरे सर डिपार्टमेंट आया. So when we return a value from a तो function, we आप get. So in this case, we have called the function again of get prop. So we are getting a tuple inside a tuple. गुड, वेरी गुड. दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. आई सेड यू कि मुझे टेक्निकल डिफरेंस बताओ. देखो, आप खुद देखो यहाँ पर टेक्निकल डिफरेंस क्या है. दिस इज अ टपल विथ इन अ टपल. ये क्या है? ये भी एक टपल है. ठीक है. और ये जो है पूरा का पूरा ये भी एक टपल है. अब ये जो आउटर टपल है, ये आउटर टपल में जो पहला जो एलिमेंट है वो है 1 विच इज अ सिंपल एलिमेंट, और जो सेकेंड एलिमेंट है ऑफ दिस टपल इज द टपल इटसेल्फ. The second element is a tuple itself. Then the third element is a string, which is the data. ठीक है. अब ये जो tuple within a tuple है, ये क्यों हुआ? Because आपने क्या किया है कि get prop, get EFP के अंदर आपने get prop को कॉल किया रिटर्न में. If you see this return statement, तो यहाँ पर return statement में as we know कि in Python when you return multiple values, ये basic technical चीजें हैं जो कि आपने हमेशा याद रखना है. ये पाइथन में जो मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न होती है वो इन द फॉर्म ऑफ टपल होती है. वो पैक हो जाती है मल्टीपल वैल्यूज, उसका एक पैकेज बनता है, पैकेज मत बोलो, उसका एक पैकेट बनता है, एंड दैट पैकेट इज योर टपल. फाइन. नाउ इनसाइड दैट रिटर्न स्टेटमेंट यू हैव अनदर फंक्शन कॉल्ड सेल्फ डॉट गेट प्रॉप, एंड दैट सेल्फ डॉट गेट प्रॉप जो है ना वो भी रिटर्न कर रहा है मल्टीपल वैल्यूज को. तो उसकी जो मल्टीपल वैल्यूज आई वो एज अ टपल आई, और फिर ये भी खुद एक टपल है जो रिटर्न हो रहा है. तो this becomes a tuple inside a tuple or tuple within a tuple. ठीक है. So something like a nested tuple. So you can have a nesting of tuple also. This is also one learning which you are getting.
कि आप टपल के अंदर भी एक आध टपल रख सकते हो. It is up to our requirement. Okay, so this also being supported in Python, and this is called cascading. Cascading हो रही है, कोई problem नहीं है, and you can do the things as per your requirement. तो देखो अभी हमने यहाँ पर अपनी कोडिंग और थोड़ी सी कम कर दी. We are reusing the code. This is how we reuse the code. यहाँ पर हमको इतना सब कुछ रिटर्न करना पड़ रहा था, अब हमने उसको और भी शॉर्ट कर दिया. हमने गेट पॉप मेथड को यूज कर लिया और हमने सीक्वेंस भी मेंटेन किया. पहले एम्प्लॉय नंबर रिटर्न हो रहा है, फिर उसके बाद में वैल्यू रिटर्न हो रही है, फिर उसके बाद में गेट टॉप की वैल्यू रिटर्न हो रही है, फिर उसके बाद में डिपार्टमेंट की वैल्यू रिटर्न हो रही है. ओके, सो गेट बैक टू द स्टूडेंट पार्ट. तो ये तीन चीजें हमने डाल दी स्टूडेंट में. नाउ लेट मी डिफाइन फ्यू मेथड्स से. सर क्लास के अंदर क्लास नहीं हो सकती हो सकती है. यू कैन हैव अ क्लास विद इन अ क्लास. इन पाइथन यू कैन हैव अ फंक्शन विद इन अ फंक्शन, यू कैन हैव अ क्लास विद इन अ क्लास. ठीक है, थोड़े से एडवांस टॉपिक है, एंड आई सजेस्ट कि पहले हमारे ये बेसिक टॉपिक्स हो जाए, फिर इंशाल्लाह किसी दिन ये एडवांस टॉपिक पे भी वी विल डिस्कस. सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, पाइथन के अंदर यू कैन हैव फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड अ फंक्शन डेफिनेशन. आई रिपीट, फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड अ फंक्शन डेफिनेशन. So you can define one function inside the definition of another function. अगर आप ये देखो, ये फंक्शन डेफिनेशन है set EMP, और ये फंक्शन के अंदर हमने ये फंक्शन को कॉल किया है, डिफाइन नहीं किया है. इसे हमने कॉल किया है, डिफाइन नहीं किया. एंड दिस इज पॉसिबल ऑलमोस्ट इन ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फाइन. बट इन पाइथन यू कैन डिफाइन अ फंक्शन इनसाइड द डेफिनेशन ऑफ अनदर फंक्शन. तो जैसा कि ये है डेफ सेट ईएमपी, तो इसी के अंदर हम एक और फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, डेफ सेट EMP1, सेट EMP2, एज पर अवर रिक्वायरमेंट, जो भी हमको फंक्शन डिफाइन करना है. तो पाइथन सपोर्ट फंक्शन विद इन अ फंक्शन. पाइथन ऑल्सो सपोर्ट्स क्लास विद इन अ क्लास. तो एक क्लास है, उसके अंदर आप एक और क्लास डिफाइन कर सकते हो. So that inner class becomes an attribute, something like an attribute of that outer class. Okay, that we'll see later if the time permits. तो setting a student properties, so self comma, you got roll number, then you got a classroom, then you got ptr pointer, then comma name. नई सीक्वेंस सही से मेंटेन करते हैं. रोल नंबर के बाद में नेम के बाद में एड्रेस के बाद में आपका एज के बाद में आपका कॉन्टैक्ट के बाद में आपका क्लासरूम के बाद में equals to r self dot classroom equals to cr, and then self dot pointer equals to p, and then after this simply call set prop. और सेट को आपको क्या क्या पास करेंगे, पहले है नेम, इसके बाद में एड्रेस, इसके बाद में है एज, और फिर इसके बाद में है कॉन्टैक्ट. डन. So this way you complete the definition of your set stud. Now let us get the stud. Get stud, और यहाँ पर हम खाली सेल्फ रखेंगे. यहाँ पर भी रिटर्न हमारा इसी तरीके से होगा. रिटर्न फर्स्ट विल बी रिटर्निंग द रोल नंबर, so we'll write self dot roll number, and then I need name and all those stuff. So for that I will get prop, self dot get prop, and then इसके बाद में मैं उसका क्लासरूम रिटर्न करता हूँ, और फाइनली स्टूडेंट का पॉइंटर. Okay, done. So this way we complete the student class, and after printing the employee, let me create one student object. We do not have any constructor, so we are getting the default constructor from the object class. I repeat, we are getting the default constructor from the object class. So s dot set student, and then let me pass the roll number as 21,
sorry, 20CO01. Some name, अहमद खान, अहमद शेख कर देते हैं। देन नेम के बाद में क्या है सेट में, एड्रेस है नवी मुंबई, and then the age, say 18, then the contact number, say 98999989999, and then after that you have classroom, say SCCO, then finally you got a pointer, say 8.9. So this values I am setting for the student, and let me now get the student. So get started, and this should be printed. So I would say print. Done. Let's see. Okay, so you got the information of the students also getting displayed. First you got the roll number, which is a string 20CO01. Then there is a tuple within a tuple. So you got the student details like the student name, then the location or the address of the student, the age of a student, and then the contact number. And then you got the class of the student, and then you got the point of the student. Okay? So this is the very basic things about inheritance. So this way you can have inheritance in Python class, and in the next session we'll see how to have a constructor in an inheritance hierarchy. Inheritance की hierarchy में constructor हम कैसे define कर सकते in a base class, then how do we use it in the derived class, and so on. ठीक है? Any question on this? Is this understood to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. One more thing, I have synced few of the things like अब ये जो program है, ये program है session on inheritance.py, ठीक है? Now I am doing this program on my local machine, और जिस मैं डायरेक्टरी में ये प्रोग्राम्स को रखा हूँ वो डायरेक्टरी को मैंने सिंक करके रखा हूँ अपने ड्राइव पर, और वही जो सिंक्ड फोल्डर है मेरे ड्राइव का वही मैंने आपसे शेयर किया। तो आपके साथ में आपके ग्रुप पे SCCO का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है स्टूडेंट्स इन्फो फाइल, तो स्टूडेंट्स इन्फो फाइल में अगर आप जाते हो तो SBLC का जो मटेरियल लिंक है वो मटेरियल लिंक में आपको एक और अंदर लिंक मिलेगा प्रोग्राम फोल्डर, तो वो प्रोग्राम फोल्डर में आपको ये प्रोग्राम भी इमीडिएटली मिल जाएगा बिकॉज इट इज सिंक्ड। सो आई होप कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर प्रोग्राम करता हूँ द सेम प्रोग्राम गेट्स अपलोडेड ओवर देयर, एंड फॉर दैट लेट मी शो यू। मैं ये स्टॉप करके एक और बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। लेट मी शेयर द कंप्लीट स्क्रीन। So let me go to your group. आप लोग के ग्रुप पे मैं जाता हूँ। Okay, I'm on your group. मैं डिस्क्रिप्शन पे आता हूँ, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक पे जाता हूँ, और ये लिंक पे आपके पास ये स्टूडेंट्स इन्फो फाइल मिलेंगी आपको, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपका एकेडमिक कैलेंडर मिलेंगे, सिलेबस के लेंगे, पीओस पीएसओ है। अब इसमें हम जैसे जैसे मॉडिफिकेशन करेंगे आपको मॉडिफिकेशन रियल टाइम में मिलते हैं, ठीक है? आप अगर यहाँ पर लास्ट लाइन देखेंगे तो पब्लिश बाय गूगल शीट एंड इट्स गेट अपडेटेड एवरी 5 मिनट्स, एवरी 5 मिनट्स में अपडेट होते रहते ऑटोमेटिकली, मतलब सिंक होते रहते। तो यहाँ पर हम और भी कुछ लिंक डाल देंगे, जैसे कि आपका जो डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल है वो भी, और फिर जो इम्पोर्टेंट नोटिस है रिगार्डिंग योर एग्जाम्स एंड ऑल दो स्टफ, तो उसकी भी लिंक्स हम यहीं पे डालते रहेंगे, ठीक है? कभी कभार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप पे कोई इन्फॉर्मेशन डालो और फिर 1-2 दिन में बाकी सब मैसेजेस की वजह से वो जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ऊपर नीचे कहीं पे हो जाता है। तो ये हमने ग्रुप के आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, इट विल बी ऑलवेज देयर एंड यू कैन फॉलो दिस लिंक। जैसे कि मैं अब SBLC के मटेरियल पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी सब यूट्यूब वीडियोस भी आ चुके हैं आपके लास्ट सेशन तक का, आज का सेशन का भी यूट्यूब वीडियो अपलोड हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ दिस इज प्रोग्राम फोल्डर्स लिंक, आई गो टू दिस लिंक, और ये लिंक पे जाने के बाद में व्हाट आई कैन सी
That's here, session on inheritance.py. तो अभी हमने जो प्रोग्राम किया वो प्रोग्राम यहाँ पर अवेलेबल है. So you can see this code, you can copy this code, you can put it into your file, into your location, and then you can modify this as per your requirement. आप इसके ऊपर easily practice कर सकते हो. ठीक है? So now I did not have to share any program with you explicitly. जो भी प्रोग्राम हम करते जाएंगे वो सब यहाँ पर आते रहेंगे. आपको इसी हायरार्की को फॉलो करना है. जो भी वीडियोस आएंगे, जो भी अपलोड्स जाएंगे, वो सब इसी लिंक के थ्रू जाएंगे. So you did not have to go here and there. Is that clear to all? And this is applicable to all the courses. ये भी सभी courses के लिए आपके applicable है.